कहानी नहीं बनाया, एक एग्जिस्टिंग केस को उसने रेफर किया है। वो केस उन्होंने कोई यहाँ डिस्कवरी नहीं किया, इसलिए वो केस रिकॉर्ड में है। वो हम डिस्कवरी करके नया केस तो निकला नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके लिए आज बहुत महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा हो रही है। आप बिल पे ही केंद्रित रहे, हमारे मेंबर भी बिल पे ही केंद्रित रख करके बात रखेंगे, आपके लोग भी बिल पे ही बोले, ये मेरा आग्रह है। एक Sir, I think while speaking the bagging legislation, he actually crossed all the limits. Indira Gandhi ji was assassinated. She is a martyr of this country. She fought against Pakistan and won the war. Entire Indian are treating Indira Gandhi as a mother. I think I am reminding the members when Pakistan war was won, Atal Bihari Vajpayee told Indira ji was a Durga at that point of time. Therefore, I think what word he used? What word he used, sir? Sir, he used the word. Indira Gandhi took the telephone and called the bank manager and asked the bank manager to be. Where he got there? Sir, he was witness there. Whether he was present there? Okay. Whether he was present there? एक सेकंड प्लीज एक मिनट प्लीज वेणुगोपाल जी, अब प्लीज वेणुगोपाल प्लीज, आपको अरे सुनिए एक मिनट प्लीज। हाँ, मैं एक व्यवस्था दे रहा हूँ, एक मिनट प्लीज। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का नाम उसमें से एक्सचेंज कर देंगे, लेकिन मेरी ये अपेक्षा है जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि चेयर पर कभी भी टिप्पणी नहीं करें। चेयर पे जो बैठा है वो हमारे लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। हम अगर सदन की मर्यादा रखेंगे तो उचित रहेगा। आप बोलना चाहते हैं? Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity to speak, sir, in between. एक विषय बोल रही है बिल के एक कमेंट्स आपने किया, उस पर टिप्पणी करना चाहती हैं? Sir, I will definitely say all this and more during my reply. I will say all this and more during my reply. But no, I have not finished yet. You may thank me afterwards. I have not finished yet, please. Sir. बुला लो उनको, बैठे चेयर में, बुला लो। हाँ ये सर, आप तो बोलिए। Sir, I'd like to appeal to you, sir. Since the point derived from, 94 and then said confine yourselves to the bill, I'm here wanting to hear and then wanting to reply. And you've taken a very considered call, sir. I respect your view that you would remove the name of former Chief Prime Minister. Equally, I think quoting Atal Bihari Vajpayee ji in the context of, he said she was Durga. We all respect Mrs. Indira Gandhi for her achievements. Of course, we equally remember her for emergency. But I think it is important. Vajpayee ji's name being quoted as though he said Mrs. Indira Gandhi is Durga is contentious. There's no proof. There are enough people who said he has not said that. Therefore, even that statement that Vajpayee ji said this should be equally removed. And you have taken a considered call, sir. Why? Mrs. Indira Gandhi is not respected? I said Mrs. Indira Gandhi is respected. Do you have an objection? I said Mrs. Indira Gandhi is respected. Okay. Do you have an objection on that? What is this, sir? What is this? Sir, equally. Therefore, I appeal to you, sir. You said that will be removed from Sambit Patra's statement. I appeal to you that under 94, if people have spoken beyond 94, and I take the Honorable Member Gogoy's name here, most of his speech was beyond 94. Would you consider please removing that also from the report?
K.C. Venugopal, member K.C. Venugopal is very, very clued into what I'm saying. And therefore he's saying, I'm challenging you. No, I'm appealing to you to remove Gogoi's complete statement, which was beyond this bill. And equally, the member who said, Chairman, hi, remove that as well, sir. That's my request to you. प्लीज वित्त मंत्री जी ने एक मिनट प्लीज वित्त मंत्री जी ने जो सवाल उठाए हैं, एक मिनट प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए दादा, प्लीज वित्त मंत्री जी ने सवाल जो उठाए हैं कि माननीय अटल जी ने क्या बोला है, मुझे लगता है कि वो रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी रिकॉर्ड की सत्यता होने के बाद ही जाना चाहिए उस विषय को, क्योंकि वो भी पुरानी घटना थी। नंबर 2, मेरी ये अपेक्षा है माननीय सदस्यों से, सभी सदस्यों से, सभी दल के सदस्यों से, हम सदन की गरिमा बनाते समय जो बिल है और जो बिल में संशोधन लाए गए हैं उसके परिप्रेक्ष्य के, उसकी परिधि में बोले। हम यहाँ बिल पर अगर पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप लगाने लगेंगे तो इससे सदन की गरिमा बढ़ेगी और जो विधेयक पे चर्चा होती है, आप अच्छे संशोधन दो, अच्छे विचार दो,